बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक्स स्टडी करेंगे उनमें पहले पॉइंट है द ज़ीरो इनपुट रिस्पांस, ज़ीरो स्टेट रिस्पांस। इसमें एक चीज़ को नोट कीजिए कि हम इनपुट को और स्टेट को अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लीनियर सिस्टम एनालिसिस। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से एडिटिविटी हेल्प करती है हमारे लीनियर सिस्टम एनालिसिस के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट दो मुख्तलिफ तरह के डिस्क्रिप्शन हैं। अगर सिस्टम की डिस्क्रिप्शन की बात करें, सो सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब इन मेनली टू वेज। एक तरीका होता है कि आप इनपुट और आउटपुट को कंसिडर करते हुए उसको डिस्क्राइब करें, तो दिस इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं आप। दूसरा मेथड ये होता है कि सिस्टम को हम डिस्क्राइब करें यूजिंग द स्टेट स्पेस मेथड और डिस्क्रिप्शन। इसको हम कहते हैं इंटरनल डिस्क्रिप्शन। सो पहला मेथड हम सिस्टम के डिस्क्रिप्शन का देखेंगे, सिस्टम के डिस्क्रिप्शन का इनपुट आउटपुट मेथड। और इसके बाद हम मूव करेंगे कि सिग्नल की मॉडलिंग हम एक पल्स के साथ कैसे कर सकते हैं। एंड पल्स एंड पल्सेस, ट्रेन ऑफ पल्सेस। अगर एक सिग्नल है, इसके बाद फिर एक हम बात करेंगे सिग्नल की मॉडलिंग की, कि हाउ टू मॉडल अ सिग्नल। सिग्नल्स मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, स्टेप है, साइन है। तो हम ये देखेंगे कि एक पल्स के साथ हम किस तरह से एक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये इसकी अपनी एक हाइट होगी। ठीक है, और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि स्टेट स्पेस मेथड, जो कि मेथड नंबर 2 है सिस्टम डिस्क्रिप्शन का, वो उसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ देयर आर टू थिंग्स। एक तो हमने रिस्पांस देखना है कि रिस्पांस, दो तरह का रिस्पांस हम स्टडी करेंगे, इनपुट और आउटपुट का रिस्पांस। ज़ीरो इनपुट की वजह से जो रिस्पांस आएगा, और ज़ीरो आउटपुट, ज़ीरो स्टेट की वजह से जो रिस्पांस आएगा। एडिटिविटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ लीनियर सिस्टम्स फ्रॉम इनपुट आउटपुट मेथड, इनपुट आउटपुट डिस्क्रिप्शन वे, और मॉडलिंग ऑफ सिग्नल। राइट। सो जब हम ज़ीरो इनपुट रिस्पांस की बात करते हैं, तो इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर आपका सिग्नल, इफ द इनपुट सिग्नल u is zero, ठीक है। सो इफ द इनपुट सिग्नल इज ज़ीरो, इसका मतलब है कि फॉर द टाइम ऑफ कंसिडरेशन, टी नॉट हमारे पास वो टाइम होता है। अगर हम टाइम स्केल की बात करते हैं, तो टी नॉट आमतौर पे हम उस टाइम को कहते हैं व्हेन वी स्टार्ट अवर ऑब्जर्वेशन, व्हेन वी स्टार्ट our observation, या you can say that work। ठीक है, okay। So then the output will be excited exclusively by the initial state। यानी इनपुट जो है वो तो आपके पास ज़ीरो रहेगी फॉर ऑल द टाइम t ग्रेटर देन इक्वल्स टू t नॉट, लेकिन जो आपके पास स्टेट है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जितना भी आपके पास जो इसके बाद जो आपके पास जो रिस्पांस है आउटपुट का y ऑफ t, इट विल बी सोलरली ड्यू टू द इनिशियल स्टेट। ठीक है, क्योंकि इनपुट सिग्नल u जो है वो तो ज़ीरो है। तो ज़ीरो इनपुट रिस्पांस का मतलब है कि द रिस्पांस विल बी बिकॉज ऑफ द अदर सेकेंड पार्ट विच इज द स्टेट, इनिशियल स्टेट। दिस आउटपुट इज कॉल्ड ज़ीरो इनपुट रिस्पांस। देख सकते हैं आपके u ऑफ t जो है वो ज़ीरो है। दिस इज कॉल्ड ज़ीरो इनपुट रिस्पांस एंड विल बी जनरेटेड बाय yzi। लिहाजा इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे ज़ीरो, z फॉर ज़ीरो, i फॉर इनपुट। तो इनपुट इज ज़ीरो।
तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द रिस्पॉन्स, दिस इज द रिस्पॉन्स when input u of t is equals to 0. ठीक है, and we have uh, initial conditions playing the main forcing role. ठीक है, लिहाजा इसको आपने, दिस इज बेसिकली नॉन जीरो है, ठीक है, ये नॉन जीरो है, इसकी कोई वैल्यू हो सकती है 3 हो सकती है 4 हो सकती है, जो भी है. So when we observe for all the positive time t greater than t naught का मतलब है कि we are talking about t naught से दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड पे all of the time, ये सारे के सारे टाइम की हम बात कर रहे हैं कि उस वक्त जो रिस्पॉन्स आएगा इट विल बी बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस, इसको हम कहते हैं जीरो इनपुट रिस्पॉन्स. ठीक है, सो अब हम मूव करते हैं सेकंड, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स. नाउ लॉजिकली जीरो स्टेट रिस्पॉन्स क्या होगा, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स में जो स्टेट है which is x of t, this is equals to 0 when we start working with the system. इसको आमतौर पे वर्किंग विद द सिस्टम को ये भी कह सकते हैं when we start observing the system, right? When we start observing the system. So if this t naught, तो इस t है, तो ये t naught के ऊपर हमने इसको काम इस सिस्टम पे हमने काम करना शुरू किया. Now at this spot जो corresponding आपकी वैल्यू होगी x of t naught, this is equals to 0. And the output, इसके बाद जो भी आपकी आउटपुट आएगी y of t, that will be solely because of the input. So x of t equals to 0, but although x of t naught is equals to 0, but u of t naught is not equals to 0. ठीक है, and onwards. And also u of t is not equals to 0. So the output is called zero state response. State जो है वो तो zero है. Zero state means this. And implied is this thing. Implied is कि जो input है is not zero. तो वो तमाम टाइम, अगर ये t है, ये t naught है, तो वो तमाम t जो बड़ा है या बराबर है t naught के from here onwards, इन तमाम के लिए u की कोई ना कोई वैल्यू होगी. u of t जो है that will be non zero, not zero. इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे जो रिस्पॉन्स होगा y of z s of t, 0 and this is for state. ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स है जिसको कहते हैं आप, दिस इज जीरो स्टेट. और रिस्पॉन्स क्यों कह रहे हैं, रिस्पॉन्स का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटपुट y. रिस्पॉन्स का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटपुट y. ठीक है, सो दिस इज अगेन द सिस्टम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज y, और इसकी एक इनपुट है u ऑफ t, y ऑफ t, और इसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो x ऑफ t हैं. जब हम सिस्टम की बात, जब हम सिस्टम को स्टडी करना शुरू करते हैं, t किसी t नॉट के ऊपर से स्टार्ट करेंगे, तो हम t नॉट के ऊपर सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि t नॉट के ऊपर हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, कि u ऑफ t नॉट क्या है और x ऑफ t नॉट क्या है, एंड देन y ऑफ t नॉट. और फिर हम पॉजिटिव साइड पे जाते हैं फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ t ग्रेटर देन इक्वल्स टू t नॉट. तो फिर हम आगे भी देखते हैं कि ये t नॉट, u ऑफ t क्या है,
x of t क्या है और y of t क्या है. ठीक है, so it's very simple कि this talks about the states, this talks about the input and this talks about the output या फिर response. ठीक है, I hope इससे आपको चीज समझ में आ जाएगी. Now moving to next slide कि अब इससे हमें क्या फायदा है लीनियर सिस्टम्स में. एडिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लीनियर सिस्टम्स की जो हम एनालिसिस में हमें फ़ायदा देती है. तो इस एडिटिविटी की वजह से हमें क्या फ़ायदा है कि अगर आप आउटपुट अगर x नॉट ऑफ t और u ऑफ t को अगर आप देखना चाहते हैं इन दोनों की वजह से, तो आप ये कर सकते हैं कि इसको डिवाइड कर दें दो पोर्शंस में. पहला पोर्शन आपके पास होगा दिस इज जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और ये वाला पोर्शन है जीरो स्टेट रिस्पॉन्स. ठीक है, नोट कीजिए. तो आपके पास यहाँ पर स्टेट इज जीरो, इनिशियल स्टेट इज जीरो और दिस इज सोलरली ड्यू टू यू ऑफ टी. यहाँ पर आपके पास जो है द इनपुट इज जीरो एंड द आउटपुट इज ड्यू टू एक्स ऑफ टी. बेनिफिट क्या है इसका? बेनिफिट ये है कि लीनियर सिस्टम्स में आप इंडिविजुअली अलग अलग इन दोनों को सॉल्व करें और इनका रिस्पॉन्स जो है उसको ऐड कर लें. सो दिस इज अ वेरी बिग बेनिफिट ऑफ यूजिंग द एडिटिविटी प्रॉपर्टी इन लीनियर सिस्टम्स. तो जो ओवरऑल आपके पास रिस्पॉन्स होगा पूरे सिस्टम का वो डिपेंड करेगा दैट विल बी जस्ट अ सम ऑफ द जीरो इनपुट रिस्पॉन्स प्लस जीरो स्टेट रिस्पॉन्स. ठीक है, so this is how additivity will help us in the linear system analysis. Thus the response of every linear system can be decomposed into zero state response and zero input response. And furthermore, these two responses can be studied separately. ये है सबसे बड़ा benefit कि हम इन दोनों को separately study भी कर सकते हैं और अलग-अलग analysis कर सकते हैं. And whenever we need, we can put the sum, then we can put them together. और एक बात ध्यान में रखिए कि ये आप नॉन लीनियर सिस्टम्स में ऐसा नहीं कर सकते. दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू, दिस अप्लाइज टू लीनियर कंडीशंस ओनली. तो चाहे वो नॉन लीनियर सिस्टम भी है, अगर लीनियराइज आपने किया है तो बट नॉट दिस डजंट अप्लाई टू बट नॉट ऑन नॉन लीनियर systems. ठीक है, so be very careful. Next, let's go through this remark. If a system is linear, then the additivity and homogeneity properties apply to zero state responses. Right? Now, to be more specific, if the initial state is zero, then the output will be excited exclusively by the input. Okay, this makes sense and we just discussed this thing. And the state input output equation can be simplified as directly, जिसमें से आप निकाल दें उसको स्टेट, इनिशियल स्टेट को आप निकाल दें क्योंकि सारा का सारा जो आपके पास है आउटपुट इट इज बिकॉज ऑफ द इनपुट. नाउ इफ द सिस्टम इज लीनियर देन वी हैव, आप इंडिविजुअली अप्लाई करें तो स्टेट्स को जीरो कर दें. इंडिविजुअली अगर आप दो सिग्नल्स को अप्लाई करते हैं, इनपुट्स को u1 और u2 डिफरेंट है, तो इनकी आउटपुट जो है वो भी सिंपली ऐड हो जाएगी दोनों के रिस्पॉन्सेस के साथ. सो यू कैन डू वन एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जांपल समवन डिड, स्टूडेंट A did the first experiment, student B did the second experiment, okay, and he used u1 signal and gets y1. Second used u2 signal and gets y2, and you as a third student C, you can directly, so this you can directly do, and you can find, you can directly find
the answer to an input signal which is sum u1 plus u2 without conducting any experiment. इन दोनों ने experiment conduct किया है, ठीक है, experiment conduct किया है, and without conducting any experiment you can do by this property, using this property u1 or u2, you can directly say okay, just give me your responses, I will add them, and this will be the response of the overall system. Similar goes कि अगर आपके पास कोई alpha है, for example someone says कि अच्छा I need an experiment number 4 और मुझे जो सिग्नल यूज करना है वो है 3 times u1. So again, no need for experiment as the system is linear. You can directly go and multiply this y1 with the 3, and this will be your answer or response to an input 3u1. ठीक है, तो this is very important, and the same thing we can do it. This is one case जिसमें हम बात कर रहे हैं zero state response का. Similarly, आप अगर चाहें तो आप zero input response के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है. So that will be u of t naught will be equals to 0, and this equation, this line will become like this: x of t naught corresponds to y, and u1 and x1, this will be going to be like this one: x of x1 of t naught, ये एक इनिशियल कंडीशन है, x2 of t naught ये दूसरी इनिशियल कंडीशन ऑफ द सेम स्टेट, ठीक है. x1 doesn't mean कि ये दूसरी स्टेट है. x1 and x2 means the different initial conditions for the same system, और इसकी जो आउटपुट होगी that will be this, ठीक है. And the same applies for alpha x1 of t naught plus alpha x2 of t naught, and the answer will be simply alpha and then y1 plus y2, ठीक है. I hope this is clear, ठीक है. But let me go through a little quick review. हम बात कर रहे हैं to calculate response. It means to calculate the output, ठीक है. और linear systems में it is heavily dependent on two things. एक तो initial state के ऊपर और जो signal आप apply करें उसके ऊपर, ठीक है. This is initial state और जो सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हैं इनपुट सिग्नल. तो रिस्पांस ये दोनों मिल के आपको रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसको हम y of t कहते हैं. अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने आसानी की, हमने इसको डिवाइड कर दिया दो पोर्शंस में. एक पोर्शन में हमने कहा कि ओके इनमें से एक जो है वो 0 होगा और एक जो है वो 0 नहीं होगा. तो जीरो इनपुट रिस्पांस का मतलब है कि यहाँ पर u of t u was 0 और x जो था x of t naught जो है वो नॉन जीरो था. फिर हमने रिस्पांस इसका कैलकुलेट कर लिया. ये दूसरा केस जो है इसके अंदर आपने कहा जीरो स्टेट रिस्पांस में, जीरो स्टेट रिस्पांस में आपने किस चीज़ को जीरो किया, स्टेट को. सो x of t naught यहाँ पर 0 है. इससे इम्प्लाई और इसके साथ ये चीज़ बड़ी लाजमी है कि आपका जो इनपुट है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. फिर जो आपके पास रिस्पांस आया दिस इज़ योर आउटपुट, और फिर आप एडिटिविटी प्रॉपर्टी के थ्रू इन दोनों को ऐड कर सकते हैं. सो दिस मेक्स द कंप्लीट टॉपिक. ओके, सो दिस इज द इनपुट स्टेट इनपुट पेयर है ऑन योर लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे आपके पास ये मौजूद है, राइट. ओके,
दिस वाज द सेकंड स्लाइड के जीरो स्टेट रिस्पांस में किस तरह से हम करते हैं कि आपके पास जो है स्टेट is 0 and you have the input non-zero and then we have this y zs. So the overall total y will be equals to y 0 input plus y 0 state. ठीक है? And this is the remarks about the other situation के जिसमें आप जो है अलग अलग इनको लीनियरिटी की वजह से एडिटिविटी और होमोजेनिटी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इनपुट और आउटपुट डिस्क्रिप्शन एक लीनियर सिस्टम्स की क्या है. अब हम सिस्टम की डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं. वी हैव सीन दैट द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम नीड्स टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. वो क्या दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. पहली चीज़ ये है कि वैल्यू ऑफ द स्टेट एट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन और स्टडी, जिसको हम कहते हैं एक्स ऑफ टी नॉट. ठीक है? वैल्यू ऑफ द स्टेट, इसको आप इनिशियल कंडीशन भी कहते हैं. इनिशियल कंडीशन या फिर आप इसको इनिशियल स्टेट भी कहते हैं. एंड द सेकंड थिंग इज अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल. यानी कि दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जो इनपुट सिग्नल है वो कैसा है फॉर द होल टाइम. अगर आप टी नॉट से टी तक स्टार्ट कर रहे हैं, टी नॉट इज 0, लेट्स से दिस इज 0, और आप 5 सेकंड्स तक किसी सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर जो इनपुट सिग्नल है वो क्या अप्लाई हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है? सो वी हैव सीन दैट द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम नीड्स दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है? सो दीज आर द टू very important things that we must know. And for the linear system, we expect two different types of responses in either case. और अभी हमने देखा that will be combined through superposition theorem to get a collective response against initial condition of the state and the application of the input signal. So the two responses that we are looking for, एक है y 0 state और एक है y 0 input. So let's do it in two separate ways. First, assume that the state is 0 at t naught. So zero state condition hai. Assuming the zero state of the system, when we apply an input signal u of t, the output, that is the response, is excited exclusively by the input. This is what we were just discussing. Now for better mathematical, अच्छा हम जो ये इस बात को रिपीट कर रहे हैं उसकी वजह ये कि अब हम इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं. मैं उन फैक्ट्स को रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो याद हो जाएं, इसलिए हम कर रहे हैं कि अभी हम देखेंगे कि उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी. ठीक है? सो फॉर बेटर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एंड टू इंक्लूड ऑल पॉसिबल सिचुएशंस, अ स्टैंडर्ड मेथड टू मॉडल सिग्नल इज adopted worldwide and in every other field. And now this is very interesting जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. वर्ल्ड बहुत ज़बरदस्त और एक स्टैंडर्ड मेथड अब एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू we do this work. Now here we will first model the signal. सबसे पहले हमें सिग्नल को मॉडल करना पड़ेगा क्योंकि हम इनपुट्स की बात कर रहे हैं, सिग्नल्स की बात कर रहे हैं. सो सिस्टम को मॉडल करने से पहले द फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट मॉडल इन अ स्टैंडर्ड वे मॉडल द सिग्नल. जब हमारे पास सिग्नल की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी तब हम फिर सिस्टम की को मैथमेटिकली मॉडल बनाएंगे. ठीक है? सो द फर्स्ट मॉडल ओके, सो हियर वी विल फर्स्ट मॉडल द सिग्नल. अभी हमने सिग्नल को मॉडल करना है. ठीक है? लेट्स मॉडल signal in this standard way, and the mathematical treatment will help us not only to understand this concept here but also enables us to extend the ideas and mathematical treatment in other courses and fields. अच्छा, ये important चीज़ है कि आपको ये जो हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं ये आपको सिग्नल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा मदद देगी. इसके अलावा और भी जितनी फील्ड्स हैं, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन है, आपका कंट्रोल सिग्नल्स है और फिल्टरिंग है, एस्टिमेशन है और डीएसपी है. इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स जहाँ पे भी
basically it will help you in nearly every other field. Okay, so what is the standard way? अब standard way की तरफ आते हैं. This is very simple. Standard is always very simple. ये बात ध्यान में रखिए कि standard is always very simple and clear, so that everyone can follow worldwide. ठीक है? So that everyone can follow worldwide. ठीक है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टैंडर्ड लुक्स टू अस के हम सादा सा लफ्ज़ है और हम इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, लेकिन इसके पीछे इनहेरेंटली बहुत सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो आती हैं. सो सिग्नल्स को मॉडल करने का जो एक स्टैंडर्ड वे है बेहतरीन, वो है पल्सेस. अब हम देखते हैं कि ई पल्स है क्या. पहले तो हम पल्स को डिफाइन कर रहे हैं. हम यहाँ पे एक पल्स को डिफाइन कर रहे हैं डेल्टा से, ठीक है, और इसको डेल्टा, दिस इज कैपिटल डेल्टा, इन दोनों को डेल्टा ही कहा जाता है. सो दिस इज स्मॉल डेल्टा एंड दिस इज कैपिटल डेल्टा. लेटेक में अगर आप लिखेंगे तो डेल्टा आप लेटेक में लिखते हैं स्लैश DELTA इन लेटेक टाइप सेटिंग. और अगर आपने ये डेल्टा लिखना हो तो दिस इज कैपिटल डेल्टा, यू विल राइट इट स्लैश विद DELTA. आई विल शो यू कि जब असाइनमेंट्स में दूंगा लेटेक के लिए तो मैं बता दूंगा. दिस इज वेरी अमेजिंग. सो डेल्टा T माइनस T1 इज अ पल्स जो कि हमारे पास यहाँ पर है, एंड दिस पल्स इज स्टार्टेड फ्रॉम T1, और ये तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा है. सो दैट्स वाई इसकी जो ये है, दिस इज आल्सो टाइम वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसकी टाइम विड्थ को शो कर रहा है. और डेल्टा हम यूज करते हैं फॉर वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम. ठीक है. T1 जो है ये है स्टार्ट टाइम ऑफ द पल्स. ओके, तो यहाँ से पल्स आपके पास स्टार्ट हुई और यहाँ पर ये पल्स एंड हो गई. राइट, दिस इज वन थिंग. अच्छा, टाइम इंफॉर्मेशन के साथ पल्स जो है आपके पास, उसमें एक तो इंफॉर्मेशन आपके पास आती है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इज के पल्स टाइम इंफॉर्मेशन. दूसरी जो इसके अंदर है वो पल्स की एम्पलीट्यूड इंफॉर्मेशन है. तो पल्स की जो एम्पलीट्यूड इंफॉर्मेशन है, इट हैज इसकी जो विड्थ है इट इज डेल्टा, एंड इंटरेस्टिंगली इसकी जो हाइट है, ऑल्दो कि ये अब आपके पास जो है टाइम में नहीं है, बट इसका जो एम्पलीट्यूड है इन यूनिट्स, इट इज वी मेक श्योर कि ये 1/डेल्टा के बराबर है. ठीक है. सो दैट ओवरऑल जब आप इसका एरिया देखेंगे या एनर्जी देखेंगे, तो एरिया अगर आप देखें तो किस तरह मल्टीप्लाई, आप इस को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी हाइट के साथ. सो इट्स हाइट इज 1/डेल्टा. तो एरिया अगर आप कैलकुलेट करें, या एरिया जिसको एरिया या फिर एनर्जी अगर आप कहते हैं, बेसिकली दिस इज रिस्पॉन्स टू एनर्जी, और ये आपके पास है डेल्टा. सो द आंसर विल बी 1. सो इसकी जो एनर्जी है या इसका एरिया है वो 1 होता है, यूनिट होता है. So it has a width of delta and the height of 1/delta and is located at time T1. T1 से start हुई है. Thus this, यानी जब आप डेल्टा के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी हाइट को, has a height of 1. Okay? This is one important point. अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि ओवरऑल अगर you have something like this, तो इसको आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें, इसका जो एम्पलीट्यूड है this is equals to 1. तो आप जिस चीज से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ यू मल्टीप्लाई दिस एम्पलीट्यूड, अब मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये चीज जो है डेल्टा,
जब ये 1 है तो इसको मैं जिस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, लेट से मैं u ऑफ t से मल्टीप्लाई करता हूँ और u ऑफ t की वैल्यू है लेट से 3, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर विल बी 3। तो वो इट विल प्रिजर्व द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड जो जो इसकी सिग्नल का होगा। सो विद दिस पॉइंट एज्यूम करें कि हमारे पास एक सिग्नल है u ऑफ t, अब वो इस तरह से चलता जा रहा है, ठीक है, ये हमारा पूरा एक सिग्नल है, ये पूरा सिग्नल है। अब इस सिग्नल को आपने डिवाइड कर दिया है, डिवाइड इन स्मॉल पल्सेस ऑफ यूनिट लेंथ। तो अगर आप ये देखिए तो दिस इज ओवर पल्स डेल्टा, ये t माइनस टी आई इसलिए है कि i आपके पास चेंज होता रहेगा, i इक्वल्स टू 1 है ये फिर i इक्वल्स टू 2, i इक्वल्स टू 3, this is I equals to 4, this is I equals to 5, this is I equals to 6 and so on, ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पर इसको ti यूज किया because it is now a sequence of pulses, periodic pulses हैं basically, और this is the height, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द वैल्यू u ऑफ ti का मतलब है u of ti, there is a difference between these two, ये पहले हम देख रहे हैं। u of t का मतलब है the full all signal, ठीक है, या सिग्नल एट एनी टाइम इंस्टेंट, इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि सिग्नल एट टाइम t। सो u of ti का मतलब है सिग्नल एट टाइम ti। तो व्हेन u of t1 की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, when we talk about u of t2 then we will be talking about the signal value at this point, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से अप्रोक्सीमेट किया है। सो व्हाट पल्स इज डूइंग, ये जो पल्सेस होती हैं सीक्वेंस ऑफ पल्सेस होती हैं, दे बेसिकली हेल्प अस टू अप्रोक्सीमेट द सिग्नल। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। सो अब मैं एक जूम वर्जन है पिछली वाली पिक्चर का। नाउ नोट दैट द लेफ्ट मोस्ट पल्स, जो सबसे ज्यादा इसकी जो लेफ्ट मोस्ट पल्स है दिस वन, इसकी हाइट जो है वो क्या है, इसकी हाइट वो होगी u ऑफ ti, ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ द पल्स, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इससे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है, ठीक है। सो वी कैन मल्टीप्लाई विद दिस। सो द इनपुट सिग्नल u ऑफ t कैन बी एक्सप्रेस सिंबॉलिकली एज, ये u ऑफ t जो है ये बेसिकली इट इज अ सम ऑफ सच पल्सेस, जहां पे आपने बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया उसकी करस्पॉन्डिंग पल्स के साथ। तो I basically I is making them discrete. So on the right side you have a discrete approximation, on the left side we have a continuous signal. तो ये एक approximation हमने की है, this is approximation, okay। So हम इस सिग्नल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, this is something important right now, इसको ध्यान में रखिएगा, okay। So since we said that the output will be a combination of a state value at t equals to t naught and the input for the time t naught to t, therefore the output will be function of both t and t naught। अब हम एज्यूम करते हैं कि अगर एक g है, आउटपुट है, g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, which is output at time t excited by the pulse u of t equals to this thing, then we can write it like this, कि बेसिकली जो आपके पास जो इम्पल्स है, ये इम्पल्स की वजह से ये आपके पास रिस्पॉन्स आया है, ओके। एंड देन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद द
u of ti and delta, ठीक है। एंड द एडिटिविटी सेज, जो अभी हमने पहले देखी कि अगर आप सम करना चाहें इन इंडिविजुअल पल्सेस को, तो देन इट विल बी विद दिस फार्मूला। सो दस द आउटपुट y एक्साइटेड बाय द इनपुट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय दिस इक्वेशन। इस तरीके से जो आउटपुट है उसको हम शो कर सकते हैं एज द इंडिविजुअल पल्स रिस्पॉन्सेज। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, हमने इंडिविजुअल पल्सेस का जो है वो रिस्पॉन्स लिया और उन सबको ऐड कर दिया। ये जो g है, basically this is the response, individual response, response है due to the pulse। इन सबको आप ऐड कर लेंगे, then we will have this equation ready। So modeling of the signal pulses, now if delta approaches zero, ये जो delta आपके पास है, if it approaches zero, the pulse becomes an impulse। तो pulse से वो impulse बन जाएगी, this pulse will become an impulse जब आपके पास डेल्टा जो है इट अप्रोचेस टू जीरो, यानी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। डेल्टा अप्रोचेस जीरो का क्या मतलब है, इस पल्स को आप और छोटा कर रहे हैं, और छोटा कर रहे हैं, इतना छोटा कर रहे हैं कि ये एक छोटी सी बारीक सी छोटी सी पल्स हो गई है। ये इसको मैं छोटा पल्स कर देता हूँ, ठीक है। आपने उसको और छोटा कर दिया पल्स को, ओके। सो डेल्टा टेंड्स टू जीरो, बहुत स्मॉल कर दिया। सो इन दैट केस ये, so this will correspond to GT TI। So as delta approaches zero, the approximation to point 2 becomes equality। जो approximation आपने की वो exactly वो एक एक value को map करनी शुरू कर देगी, and the summation will become integration। हम वापस continuous time की तरफ जा रहे हैं, and the discrete TI will become a continuum variable represented by tau, ठीक है। So then we will have this equation जिसमें आप इंटीग्रेट करेंगे, this is called the impulse response, this is our signal, input signal, और हमको उसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। नाउ नोट दैट ये जी टी कॉमा टॉ जो है ये वेरिएबल, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। एक वेरिएबल आपके पास है टी, टाइम वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल आपके पास है टॉ, जो इंटीग्रेशन वेरिएबल है। The second variable denotes the time at which the impulse input is applied, and the first variable denotes the time at which the output is being observed। So tau तो वो टाइम है जिसमें आपने इनपुट अप्लाई की है, और t वो टाइम है जिसमें आप आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं। Because this is the response excited by an impulse, it is called impulse response, ठीक है, ये impulse response है। So with this definition we will move forward, and there are few remarks to complete the topic। हम उसको complete करते हैं। So if a system is causal, the output will not appear before an input is applied, there will be a small delay। So thus we have this has to be a causal। So t जो है वो आपका tau से थोड़ा छोटा होगा। A system is said to be relaxed at t naught if its initial state at t naught equals to 0। initial state t naught अगर ये 0 है तो the system is relaxed। ये एक टर्म है जिसको आप ध्यान में रखिए। In this case, the output y of t for t greater than 0 is excited exclusively by the input u for t greater than t naught। Thus, the lower limit of the integration can be replaced by t naught, and if the system is causal as well, then ये जो इसका impulse response है वो भी 0 होगा। लिहाजा जो अपर लिमिट है इंटीग्रेशन की 2.3 में जो हमने देखी थी, अपर लिमिट दिस वन, it will be replaced by some time t, and in conclusion every linear system उसमें जो आपके पास जो लिमिट है which is relaxed, linear system which is relaxed, तो relaxed होने की वजह से आप infinity पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और we have a t naught here, and instead of, तो वहाँ पर जहाँ पे आपके पास माइनस इन्फिनिटी था that becomes t naught, और जो पॉजिटिव इन्फिनिटी that becomes t। So this is the integration for a system जो linear system जो कि relaxed है, ठीक है। इसमें नोट करें तो ये g जो है basically impulse response है। Okay, we have a few more
Slides note that in this derivation, the condition of lumpedness is not used. Therefore, any lumped or distributed linear system has such an input-output description. And this description is developed using only the additivity and homogeneity properties. Therefore, every linear system, uh, be it any mechanical or electrical, chemical, whatever, has the same description. ठीक है, इस तरह से आप किसी भी सिस्टम को लीनियर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी इसमें क्या चीज़ है, इफ आई नो, जो एक पॉइंट जो मैं आपको एज अ मैसेज लेके चाहता हूँ कि आप जहन में रखें वो ये कि इफ आई नो द इम्पल्स response of system, I can find output for any input signal. Simple. ठीक है, अगर आपको बस आपको ये डिटरमिन करना है, फाइंड दिस ऑफ द सिस्टम, तब आपके पास कोई भी इनपुट सिग्नल हो, साइन, वेव, स्टेप, व्हाटएवर, आप उसका आउटपुट को कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, सो बेसिकली जो 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 आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है टी कॉमा टॉ, ये है इम्पल्स रिस्पॉन्स of a system is important to know. That's it. ठीक है, अगर आपको वो पता है वेदर वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल कोई भी है, आप उसकी आउटपुट को डिटरमिन कर लेंगे. So this is the last 2 slides on signal modeling using pulse. So if a linear system has, let's say, multiple input terminals or multiple output terminals, P inputs and Q outputs, ठीक है, it may be up to P inputs from 1 to, and it may have some outputs, Q outputs. ठीक है, so then we have to use the G जो है वो बन जाएगा एक अदद मैट्रिक्स. ठीक है, और the matrix will have this matrix will be with the individual impulse responses. ठीक है, so G of ij t comma tau is the response at time t at ith output terminal due to an impulse applied at time tau at the jth input terminal. तो आप एक के ऊपर एक पल्स अप्लाई करेंगे and you will observe the output. ठीक है, and then you observe the second, third, fourth, fifth up till Q. So एक इम्पल्स आप अप्लाई करते हैं और आप रिकॉर्ड करेंगे ये सारी आउटपुट्स, फिर आप दूसरी के ऊपर एक इम्पल्स अप्लाई करेंगे, सारी आउटपुट्स को रिकॉर्ड करेंगे, तीसरी को अप्लाई करेंगे, सारी आउटपुट्स को रिकॉर्ड करेंगे अप टिल यू अप्लाई टू P. तो आप तकरीबन यू विल अप्लाई P इम्पल्सेस, ठीक है, एक एक करके, वन आफ्टर द अदर, one after other, and record the output. हर पल्स पे आप सारे आउटपुट को रिकॉर्ड करेंगे. So if ij ith आउटपुट टर्मिनल है, jth इनपुट टर्मिनल, so this is I and j, g I j. तो jth इनपुट टर्मिनल का मतलब है ये. So this vector will be generated by when you apply the first pulse, और बाकी सबको रिकॉर्ड करेंगे तो you will get the first column. ठीक है, the first column, इसको मैं यूं लिख लेता हूँ, the first column when pulse is applied at input 1 and all outputs are recorded. बेसिकली उनकी इम्पल्सेस को रिकॉर्ड किया. उसके बाद फिर आप जब सेकंड पल्स आप अप्लाई करेंगे और सारी आउटपुट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, एंड सो ऑन अप टिल दिस. ठीक है, ओके.
So so the that is Gij t comma tau is the impulse response between the jth, ये jth इनपुट है, और I जो है आपके पास ith आउटपुट है, ठीक है। दस G, कैपिटल G इज कॉल्ड द इम्पल्स रिस्पॉन्स मैट्रिक्स, पूरा का पूरा आप सिस्टम का मैट्रिक्स बना लेते हैं। We stress once again that if a system is described by 2.5, this one, then the system is linear relaxed at t naught and causal, ठीक है। causal भी होगा, relaxed at t naught, relaxed at t naught का मतलब है x of t naught जो है वो तक सारे के सारे जीरो हैं, and the system is linear, ठीक है। So this ends our discussion about uh, signals आज जो हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में समरी हमने ये डिस्कस किया कि लीनियर सिस्टम्स की जब हम बात करें तो द मोस्ट क्रिटिकल थिंग, चाहे वो सिमुलेशन हो या कोई भी इसकी एनालिटिकल कैलकुलेशन, तो उसमें स्टेट की कंडीशन, इनिशियल कंडीशन और जो इनपुट सिग्नल है, दे प्ले द की रोल। एडिटिव की वजह से हम इनको इंडिविजुअल सॉल्व करके बाद में ऐड भी कर सकते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए। एंड व्हाट वी फिगर आउट के उसके बाद हमने ये देखा कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्पल्स से पहले हमने ये देखा था कि आपको किसी भी सिग्नल को मॉडल करने का सबसे अच्छा तरीका है वो है पल्स और अ सीरीज ऑफ पल्सेस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडलिंग ऑफ सिस्टम यूजिंग द स्टेट स्पेस इक्वेशंस करेंगे। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।